And we had started with a self-stabilizing algorithm for distributed mutual exclusion. This is the graph that we are assuming for the distributed system. There are multiple nodes, but they are all connected in a ring type topology. And mutual exclusion algorithm is a token based algorithm. That means in a legitimate state, we want only one process to be holding the token. So whoever is holding the token is assumed that has the permission. It is assumed that that node has the permission to enter the critical section. So a node can enter the critical section only if it has the token. So how have we defined the token? We define the token using uh, some rules which are executed by all the nodes in the system. Okay, so node and process is used interchangeably. That means one node is executing one process. Okay, so we have every node will execute a rule. The rule is comprised of two parts. One part is the guard. Guard is a kind of condition. So the node will keep checking the guard in a loop whenever the guard is true, okay, because it is a Boolean condition. So whenever it is true, then it is possible for that node to make a move. And that is the point at which you say the node is privileged. And in this mutual exclusion algorithm, privilege means that you have the privilege to enter the critical section. Okay, so this much I had discussed last time. So today we'll see what are the rules and how do the rules work. Okay, so there are two types of rules. One rule is for one node in the ring. That node in the ring is in this examples in these slides taken as P naught, the node with the ID 0, the first node. All the other nodes will execute another rule. Okay, so one rule for one node and one rule for all the other nodes. So every node is executing its rule, whatever is the rule for that node, continuously in a forever loop. Okay, so today we'll directly come to the rules. What are the two rules? So you'll see the rules with me as I move the mouse pointer. So there are two rules. One is for P naught and other rules are, I'll just wait, someone is joining. Okay, so one rule is for P naught. All the other nodes have a second rule. Okay, so the rule is what is between repeat and forever. Why is it repeat and forever? Because you try to understand this is a self-stabilizing kind of algorithm. So self-stabilizing means anytime you move out of the legitimate state, the nodes will execute the rules themselves and the system will move to a legitimate state. Okay, so this may not happen in just one step. It may take more than one step to move, but ultimately in a finite number of moves, the system will move to a legitimate or a legal state. So now we'll understand what the rule is. So first thing for the rules is that they are based on a variable x. So x is the state of the node. Okay, so every node has a different value of x, or can have same also, but it has its own value. Okay, so every node, so that is why this is used as an array. So any node has a value which is between 0 to k minus 1, and k is any value greater than n. What is n? N is the number of nodes in the ring. Okay, so now why I have used this value of k? Because we want this x to lie in a certain range of values. So if you see here, you can see a mod k. So that means the values of whatever the node's x value will lie between 0 to k minus 1, because mod k can be between 0 to k minus 1. Okay, so now first rule is for process 0. Okay, this is the first node or a special node or the anchor of the ring. So this is the first node. Now what is the rule? So in this slide, it is being, the two parts of the rule are being divided by this arrow sign. So whatever is to the left of the arrow in blue color, okay, that is the guard. Okay, guard is the condition, the Boolean condition that is being checked by the node. And whatever is to the right of the arrow,
That is what is the move. Okay? What is the action which will be taken by the node. But when can this action in red be taken? Only if this condition is true. Okay, so this action is dependent upon this condition. So now first understand what is the condition. The condition is that if for process P0 its value of x, okay, x0 means value of x at the node 0. So that means its own value. We are executing this rule at process 0. Okay? So if its value is same as, okay, this is a equality check. Someone's mic is unmuted. Please mute it. So if its own value of x is same as the value of x for its predecessor. Okay, so if you remember last class I had told you there is an assumption in a self-stabilizing algorithm we can read the value of our own x and the value of our predecessors. Okay, so what is the predecessor for process 0? What is the node that comes just before process 0? N minus 1. Okay, so you have the nodes from 0, 1, 2, 3 till n minus 1. It is a ring, remember. Okay, so 0 to n minus 1. So who is the predecessor for 0? It is n minus 1. So the condition says if value of x at process 0 is same as value of x at its predecessor. So this is the Boolean condition. Okay. So if this is true, then process 0 can make a move which says, okay, take this action. Okay. Yeah. So please take care, your mics are muted. So if process zero's value of x is same as value of x for its predecessor, then this is the action. You must understand what is the action. It increases its value of x by 1. Okay, but we don't want it to go infinitely higher, so it is taking mod k. So that means if k is say 5, so the value of mod k can be between 0 to 4. So once it is 4, then 4 plus 1 5, it will again turn to 0. So the values will keep rotating between 0 1 2 3 4, है ना? ऐसे ही बढ़ेंगे जब हम mod k से इसको डिवाइड करें वैल्यू को. तो अगर 0th प्रोसेस की वैल्यू अपने n-1 की वैल्यू के इक्वल फाइंड करता है, कौन फाइंड करता है? प्रोसेस 0. ये एक्शन का हो रहा है, ये देखो, दिस इज बीइंग टेकन एट प्रोसेस 0. सो देन व्हाट इट डज इट कि मेरी वैल्यू मेरे प्रेडिसेसर के इक्वल है, तो देन व्हाट इज एक्शन इट कैन टेक? इट कैन इंक्रीज द वैल्यू बाय 1. okay, for any other process, and this action is being taken in a loop. Okay, so always it is taking, as soon as it finds that its value is equal to its predecessor, then it can change its value by +1. For any other process j, so any other process means all processes apart from process 0. अब इसके लिए गार्ड कौन सा है? ये वाला जो ब्लू में मैंने हाईलाइट किया है. अगर इसकी वैल्यू j की वैल्यू अपने प्रेडिसेसर के इक्वल नहीं है, okay, now see there is a difference. You want the value of x for the process 0 to be different, but you want all the other processes to have the same value. तो यहाँ पर हम क्या चेक करें? अगर प्रोसेस j की वैल्यू अपने प्रेडिसेसर के इक्वल नहीं है, okay, it is not same as its value of its predecessor, then make it same as the value of the predecessor. ये assignment है, assignment. So this is also assignment, this is also assignment, this is for training. Okay, so if the value is not same as the value for the predecessor, then make it equal to the value of its predecessor. Okay, so these are the two rules which are being executed at all the nodes. Okay, so 0 has a separate rule, all the other processes have the separate rule. Okay, so same rule for all the other processes, which is separate from the rule for 0. So now what is the significance of this guard? That if a node finds that its guard is enabled, when do we say that its guard is enabled? When this condition is
ट्रू। जब 0 के ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इसको क्या बोलते हैं कि 0th प्रोसेस का गार्ड इनेबल्ड है। अगर किसी प्रोसेस सपोज 2 का गार्ड इनेबल है तो कब होगा, अगर 2 की वैल्यू सेम नहीं है 1 की वैल्यू के साथ। तो कंडीशन का ट्रू होने को ही यहाँ पर गार्ड का इनेबल्ड कहते हैं। एंड व्हेन आई से गार्ड इज इनेबल्ड दैट मीन्स द प्रोसेस हैज द टोकन। ओके, सो फिर से अभी इसका मीनिंग समझो, ये कैसे वर्क करेगा, ये एक एग्जांपल से हम करेंगे अभी। तो अगर सपोज हमारे पास है कि पी नॉट प्रोसेस ने देखा कि मेरा गार्ड इनेबल्ड है, तो गार्ड इनेबल्ड की हम क्या मीनिंग लेके चल रहे हैं कि गार्ड इनेबल्ड का मतलब ये है कि उसके पास टोकन है। और ये किस चीज के लिए एल्गोरिथम है, दिस इज फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो जिसके पास टोकन है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है। तो इसी से हम अब इंटरप्रिटेशन लगाओ कि अगर हम टोकन को गार्ड के इक्वल रख रहे हैं तो कितने नोड्स का गार्ड इनेबल होना चाहिए एट वन टाइम, that is equal to the number of tokens that are possible in a ring. And how many tokens are possible in a ring? Only one token is possible in a ring, है ना? Because token जिसके पास है वही critical section में enter करेगा. So if I have just one token, that means one process can enter the critical section. So now what is happening here is that if there is just one token in the whole ring, that means the system is in a legitimate state. Okay, but if more than one token is there, more than one token means more than one processes have their condition as true. तो अगर एक से ज्यादा का ट्रू है दैट मीन्स एक से ज्यादा के पास टोकन है, तो वो तो लेजिटिमेट स्टेट नहीं है। तो तब क्या होगा, इन्हीं रूल्स को एग्जीक्यूट करते करते हम ऐसी स्टेट में पहुंच जाएंगे जिसमें कि एक ही टोकन रह जाएगा। ठीक है, तो हमने दो प्रॉपर्टीज करी थी, कन्वर्जेंस और क्लोजर। तो कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या हो गया कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेस के लिए द कंडीशन इज ट्रू, condition is true is same as enabled guard and it is same as having the token, then ultimately we want that the system should move to a state where there is just one token, that means there is just one enabled token. And closure means agar hum aisi state mein pahunch gaye ki there is one token, then the system should continue to remain in such a state till the time there is a failure. Okay, और ये जो टोकन है ये लोकल स्टेट अपडेट होती जाएगी और टोकन पास होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही के पास रह जाएगा, इट विल कीप चेंजिंग फ्रॉम और मूविंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू द अदर प्रोसेस। ओके, सो रूल्स हमने देख लिए, पहले हम इसका ये एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एग्जाम्पल में रूल्स लिखे हुए हैं ऊपर, ये P0, P1, P2, P3, P4 हमारे पास प्रोसेसेस है। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कहीं पर ना, टोकन ये जो ड्रॉ हुआ है एक कहीं पर एनिमेशन में थोड़ा लैग हो रहा है, तो जो मैं बता रही हूँ उसको साथ साथ सुनते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये जो वैल्यूज दिख रही हैं 0 0 5 5 0, ये व्हाट आर द वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज फॉर x, है ना, जो स्टेट है। सो P0 की वैल्यू है 0 x के लिए और उसके प्रेडिसेसर की वैल्यू भी है 0। ऐसे ही अगर हम P2 को देखें, P2 की वैल्यू है 5 एंड इट कैन आल्सो रीड द वैल्यू ऑफ x फॉर इट्स प्रेडिसेसर P1 which is 0. So every process knows its own value of x and its predecessor's value of x. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या देखना है, ये हमें एक इनिशियल स्टेट दी हुई है। इनिशियल स्टेट में हमें ये चेक करना है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जिसका गार्ड इनेबल्ड है। ऑलराइट, गार्ड इनेबल्ड कैसे देखेंगे, P0 का हमारा गार्ड क्या था कि x की वैल्यू P0 की इज सेम एज द वैल्यू ऑफ इट्स प्रेडिसेसर x। उस केस में इसका गार्ड इनेबल्ड है। तो चेक करो, इसकी वैल्यू है 0, इसके प्रेडिसेसर की वैल्यू भी है 0, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने का मतलब इसका गार्ड इनेबल्ड है। सो 1 इज P0। अब किसी और का गार्ड अगर इनेबल्ड नहीं होता तो ये स्टेट लेजिटिमेट होती। तो अब हम बाकियों को चेक करते हैं, बाकी सबके लिए रूल चेंज हो जाता है। वो रूल क्या होता है कि अपना x सेम नहीं होना चाहिए प्रेडिसेसर के x के जितना। तो अब हमने यहाँ पर चेक किया, इसका सेम है
ओके, इसका अपना 0 था, प्रेडिसेसर का भी 0 है, गार्ड इज नॉट इनेबल्ड। P2 पे आए, P2 का 5, प्रेडिसेसर का 0, कंडीशन ट्रू हो गई, its own x is not same as x of its predecessor, that is why इसका गार्ड भी इनेबल्ड है। तो यहीं पर ही एक्चुअली हमें पता चल गया कि इलेजिटिमेट स्टेट है। बाकी को भी चेक करेंगे, 5 एंड 5 सेम, इसका गार्ड इनेबल्ड नहीं है। 0 and predecessor's value 5 not same, so iska guard be enabled hai. So how many processes for which the guard is enabled? 1, 2 and 3. So this is an illegitimate state. Now the question is, if I have 3 processes whose guard are enabled, how many of them can take the step? ये जो मूव थी, जो राइट साइड पैरो के मूव थी, अगर सब एक साथ लेंगे ना, देन वो कंडीशन जिसके बेस पे हमने चेंज किया था वो ही वैलिड नहीं रहेगी। तो ये चीज ध्यान में रखनी है that if there are multiple tokens, multiple guards enabled, only one process out of these will make a move. कौन कौन ले सकता था मूव? तीनों ले सकते थे, लेकिन लेगा सिर्फ एक। अब वो कौन लेगा? वो जो है यहाँ पर इस प्रोसेस में हम एज्यूम करें कि कोई शेड्यूलर है, that scheduler is telling that which of the processes can take a step. So if I give this question in exam, then you can have both the cases. Either I will tell you that P0, P4, P2 में से I'll give you a rule कि ठीक है, जिसकी lowest ID है वो पहले लेगा, ठीक है। नहीं अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो हम खुद से एज्यूम कर लेंगे कुछ भी, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी आंसर में, अल्टीमेटली we'll get to a legitimate state. तो ओनली डिफरेंस इज कि हो सकता है अगर मैं यहाँ पर P0 का स्टेप लूं तो 3 स्टेप्स में हम लेजिटिमेट स्टेट में पहुंच जाए, P4 का लूं तो 5 स्टेप में पहुंच जाए, P2 का लूं तो 1 स्टेप में पहुंच जाए। The only difference will be the number of steps which might be taken to reach the legitimate state, but there is no difference in its correctness. तो यहाँ पर 3 है, तीनों में से किसी एक को आपको मूव करवानी है, ठीक है, बाकी नहीं मूव कर सकते हैं। तो हमारे स्लाइड वाले एग्जाम्पल में वी आर अज्यूमिंग दैट P0 will take a step. So what is the step for P0? वही रूल, अगर उसकी वैल्यू सेम है तो वो उसको क्या बढ़ा देगा? +1 कर देगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 थी, इसने देखा इट्स ओन वैल्यू 0, so it will increment the value to 1. Okay, so it changes its value to 1. Now see, again you'll have to recompute कि किस किस के पास गार्ड है। क्यों? अब देखो इसका गार्ड ऑफ हो गया, कैसे ऑफ हो गया? अब सेम नहीं है, लेकिन बाकी सब प्रोसेसेस में क्या होना चाहिए था? प्रेडिसेसर के जैसा सेम होना चाहिए था। तो अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा का गार्ड इनेबल हो गया और वो है ये वाली P1 का भी गार्ड इनेबल्ड है, ठीक है, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट P1's guard is also enabled because its value is not same as the value of its predecessor. P2's guard is enabled because its value is not same as P1. P3's guard is not enabled, सेम है दोनों की वैल्यू। P4 का इसलिए इनेबल्ड है क्योंकि डिफरेंट है। तो कितने का हो गया गार्ड इनेबल? 4, P2 एंड P1। सो एनी वन यू कैन पिक बट जस्ट वन, ठीक है, एक पिक करना है, किसी को भी पिक कर सकते हो। से शेड्यूल सेलेक्ट्स P2 टू टेक अ स्टेप। तो P2 का स्टेप क्या होता है? ये जो दूसरा रूल था, अगर वैल्यू सेम नहीं है प्रेडिसेसर के जैसी वैल्यू तो मेक इट सेम एज द वैल्यू ऑफ इट्स प्रेडिसेसर। तो P2 क्या करेगा? इसने देखा मेरी वैल्यू सेम नहीं है मेरे प्रेडिसेसर जैसी, इट विल मेक इट्स वैल्यू सेम एज द वैल्यू ऑफ इट्स प्रेडिसेसर, सो इट विल मेक इट्स वैल्यू एज 0। तो P2 की अब नई वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब हम पहले मैं 1 सेकंड के लिए पॉज करती हूँ, अपने आप से बिना इस एनिमेशन को देखे अपने आप से कंफर्म करो या चेक करो कि किस किस का गार्ड इनेबल्ड है। गार्ड इनेबल्ड की कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, जो ये इफ में आ रहा है ये गार्ड को चेक करने की कंडीशन है, ये गार्ड को चेक करने की कंडीशन है। गार्ड और टोकन सेम है इस वाले एग्जाम्पल में। देख लिया P0 का
guard is not enabled, सेम नहीं है वैल्यूज, बाकी सब में सेम होनी चाहिए थी. 0 नॉट सेम एज प्रेडिसेसर, ये वाला रूल. ठीक है. सो गार्ड इनेबल्ड. 0 सेम एज प्रेडिसेसर, ये पहले वाले की लैग करके आ गए यहाँ पे, इसका गार्ड इनेबल्ड नहीं है. ठीक है, ये P2 का गार्ड इनेबल्ड नहीं है. लेकिन अगर हम P3 का देखेंगे, P3 5, okay, not same as predecessor 0, so actually P3's guard is enabled. P4 value not same as predecessor, P4 की वैल्यू भी यहाँ पर गार्ड इनेबल्ड है. अब क्योंकि मल्टीपल का गार्ड इनेबल्ड है, तब अभी भी लेजिटिमेट स्टेट है, तो किसी एक को स्टेप लेना पड़ेगा. तो हमने किसका स्टेप ले लिया? P4 को एज्यूम कर लिया. ठीक है, ऐसे एज्यूम करूँ मैं रैंडमली, कुछ भी रूल नहीं लगाया, ऐसे ही रैंडमली पिक कर लिया मैंने रूल. तो P4 ने अपनी वैल्यू सेम कर ली अपने प्रेडिसेसर जैसी. ठीक है, तो यहाँ पर इसने अपनी प्रेडिसेसर जैसी, वापस आ रही हूँ, यहाँ पे वैल्यू 5 थी ना, इसने अपने प्रेडिसेसर जैसी सेम कर ली यहाँ पे वैल्यू, तो इसके पास भी वैल्यू आ गई 0. ठीक है, अब अगर हम चेक करेंगे कि किस किस के पास गार्ड है, किस किस का गार्ड इनेबल्ड है. P0 का तो नहीं है, P1 का है ना. P1 का वैल्यू ऑफ x नॉट सेम एज द वैल्यू ऑफ प्रेडिसेसर, सो P1 का गार्ड इनेबल्ड है. P2's वैल्यू सेम एज द वैल्यू ऑफ प्रेडिसेसर नहीं है. P3 सेम नहीं है. P4 सेम नहीं है. तो किसके पास गार्ड है, इनेबल्ड है? सिर्फ P1 के पास. तो एक के पास ही गार्ड इनेबल रह गया, तो एक ही के पास टोकन है, तो ये जो स्टेट है ये लेजिटिमेट स्टेट है. तो हमें कंप्लीटली इलेजिटिमेट स्टेट से कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स में लेजिटिमेट स्टेट पे पहुंच गए. इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस. ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कन्वर्जेंस. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर यहाँ पर कोई फेलियर नहीं होता, अब एक बार तो हम लेजिटिमेट स्टेट में पहुंच गए, अब टोकन किसके पास है? P1 के पास है. So if the token remains always with P1, no one else will be able to enter the critical section. So this token should pass also, and the system should remain in a legitimate state also. So that property is called closure. Okay, so we are in this condition. So P1, P0, P1, P2, P3, P4, the same example, only P1 has the token. Okay, so how the closure property is implemented or how the token is passed. So what is happening is, again, because this is a, remember, repeat forever loop, तो ये कितनी देर तक होल्ड करेगा टोकन को? जब तक इसको क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन करनी है. अगर इसने क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना होता और इसके पास टोकन आ जाता, तो फिर ये सीधा रूल एग्जीक्यूट करके टोकन को पास कर देगा. लेकिन अगर इसको क्रिटिकल सेक्शन एंटर करना है, तो इट विल एंटर एंड देन एग्जीक्यूट द रूल. And what is the rule that will be executed? Same. Okay, the same rule. No new rule is there. So, अब क्या होगा? P1 will see that its guard is enabled. It can enter the critical section. After doing its execution, then it will execute the state change rule. What is the state change rule? My state is not same as the state of my predecessor. So, I'll make my state same as the state of my predecessor. तो ये क्या कर देगा इसको? इसको 1 कर देगा, क्योंकि इसके प्रेडिसेसर की वैल्यू क्या है? 1. तो जब इसने 1 कर दिया, तो खुद से देखो किसका गार्ड इनेबल हो जाएगा? इसका गार्ड इनेबल हो जाएगा. तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो अब इसका गार्ड ऑफ हो गया. इट्स वैल्यू इज सेम एज द वैल्यू ऑफ इट्स प्रेडिसेसर. बट किसका गार्ड इनेबल हो गया? P2 का, because P2's value is now not same as the value of its predecessor. Okay, so the token is said to move from P1 to P2. So token will now come from P1 to P2. But is the state legitimate? Yes, the state is legitimate. Why? Because there is only one process which has the token. फिर जब इसने अपना एंटर करके एग्जीक्यूट कर लिया, तो ये अपनी स्टेट चेंज करेगा. स्टेट चेंज कैसे होगी? इसी रूल से. ये इसको 1 कर देगा.
तो किसका गार्ड इनेबल हो जाएगा? P3 का। P3 अपना एग्जीक्यूट करके 1 कर देगा, P4 का 0 था तो वो 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? सारे 1 हो जाएंगे। जब सारे 1 हो जाएंगे तो ये भी 1 और ये भी 1, तो किसका गार्ड इनेबल हो गया? P0 का गार्ड इनेबल हो जाएगा। तो P0 किसको क्या कर देगा? P0 विल मेक इट टू 2, है ना? पहले इसने 1 किया, फिर ये 1 करेगा, 1 1 देन 2, सो देन 2 पे again 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 again 0 0 1 1. Okay, so this way the system will remain in a legitimate state. Failure का मतलब क्या है? कि without any reason, without executing the rule, any rule, P4 ने कुछ यहाँ पर कुछ failure हो गया और P4 की state corrupt हो गई, सीधा ही 3 बन गई। तो अगर 3 बन गई तो कितनों के गार्ड इनेबल हो गए? P4 का गार्ड भी इनेबल हो गया और P2 का भी गार्ड इनेबल हो गया। तो हमारे पास 2 का गार्ड इनेबल हो गया, तो फेलियर स्टेट है। फिर से वो स्टेप्स लेंगे और कन्वर्ज कर देंगे लेजिटिमेट स्टेट में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट